అన్ని అంశాలు పరిగణనలోకి తీసుకున్నాకే తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నదీ యాజమాన్య బోర్డుల పరిధి నిర్ణయించామని కేంద్ర జలశక్తి శాఖ తెలిపింది. గత రాత్రి ఇచ్చిన గెజెట్ నోటిఫికేషన్ తయారీకి ఎంతో చర్చించామని, అందులో ఉన్న ప్రతి పదం వాక్యం వెనుక ఎంతో ఆలోచన ఉందని తెలిపారు. ఏపీ పునర్విభజన చట్టం మేరకే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. బోర్డుల నిర్వహణ వ్యయాన్ని రెండు రాష్ట్రాలు సమానంగా భరించాలని కేంద్ర జలశక్తి తెలిపింది. నోటిఫికేషన్ వచ్చిన 60 రోజుల్లోగా 200 కోట్ల రూపాయల చొప్పున డిపాజిట్ చేయాలని సూచించింది. 2014 मार्च में उसी एक्ट में प्रोविजन था कि जो पानी के संबंध में दोनों जो राज्यों के बीच में जो पानी का वाटर इश्यूज मेनली पर्टेनिंग टू द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, essentially sections 84 to 91 of the APRA are the ones which lay down how exactly the waters of Krishna and Godavari rivers would be equitably distributed and the benefits thereon will be equitably distributed between the two states. कि जो आज हम जिस तरह के हिस्टोरिक मोमेंट पे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है. Decision on the jurisdiction of GRMB and KRMB, number 1. Number 2, submission of DPRs of new projects by state governments to GRMB and KRMB for appraisal and sanction by the Apex Council. Number 3, establishing a mechanism for determination of share of Krishna and Godavari waters between the states of AP and Telangana. और लास्ट था शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ KRMB टू AP. ये 4 हमने एजेंडे रखे जो 6 अक्टूबर को माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, जो उनके चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने और जो हम लोगों ने जो निर्णय उस दिन लिए, दे वर नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक. वाई? सिंस 2014 उसके बाद भी हम लोगों ने इसको काफी गहन चिंतन और काफी सोच विचार के बाद जो हमने जो ये कल रात में जो ये हमारा गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, इसका बेसिकली इसके पीछे बहुत थॉट है. और इसमें हमारा जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन जो प्रीमियर एजेंसी है, इनके ऑफिसर्स ने, मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के रात दिन लग करके इस पे काम किया. एक एक शब्द और एक एक लाइन हम लोगों ने शायद कि जितनी शायद ही कोई, शायद हमको लगता है कि पार्लियामेंट में भी बिल जाते वक्त शायद इतना डिस्कशन नहीं हुआ होगा जितना हम लोगों ने इसको सोच विचार करके इसको हम लोगों ने तैयार किया. Notification shall be responsibility of the respective boards. The respective boards shall now regulate the supply of water and power to the states of AP and Telangana as per provisions of the APRA. यानी लेटर एंड स्पिरिट में जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कटिबद्धता है या जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसके लिए हमने ये प्रोविजन भी इसमें रखा हुआ है. सो वी हैव मैंडेटेड दैट दे शुड डिपॉजिट 200 crores each within 60 days of notification. Notification was 15th July. So 60 days they have to deposit so that these boards can function with the energy and devotion and dedication that they were intended to be. And they should not fall short of money, and they should not be looking here and there for resources. Being part of any of the 3 schedules cannot be treated as deemed approval. Just because we have mentioned something in the schedules does not mean that we have sort of given a tacit or deemed approval to them. We have taken care, and this is very important because this has been some sort of, issues in the boards.